Hello everyone, welcome back to my channel Swedeep Academy. As you know, this is the MCQs Marathon session of class 10th chapter 2 Civics Federalism chapter. आशा करी ए सेशन टी बहुत फ्रुटफुल हम एंड आपण मानकर बहुत सहायतार आसीबो. रीजन इज ना ए MCQs मैराथन रे नॉट ओनली कि आमे केवल MCQs डिस्कस करिबा, it will help you a lot regarding building your concept about this chapter or about this concept. Reason is from each and every minute concepts, छोटो छोटो concept छोटो छोटो details को भी add करा जायछि in a question form. So concept build हवा सह छोटो छोटो doubt भी clear हबो and at the end of this session बहुत बढ़िया गोटे confidence build हबो on this chapter, that is federalism. So without wasting time, let's start this session. First question is, what is federalism? First question is, what is federalism? Now a system where only central government governs the country. Only central government governs the country. Second, a system in which power is shared among all citizens equally. Third, a system of government in which power is divided between central authority and various constituent units. And last one, a system where military control the state. ये तो कदापि होबनी. Okay, and you know that federalism is a system of government in which power is divided between central authority and various constituent units. जाको कि हमें state government बोली consider करूँ or other any other government or like local governments. Okay, so the right answer will be option C. In a federal system, which level of government handle matters of the national interest? You know that जमती कि पूर्व देखिले फेडरलिज्म रे at least two types of government रहिबा दरकार. One is for the whole country जाको हमें कहूचे central government, and for the local day to day need state government is there. So which level of government handle matters of national interest? National interest को के handle करे ना central government. So right answer will be option C. It's a previous year question, that is, which one of the following countries is an example of a federal system? Okay, बहुत गुड़ाए तो country अच्छी, but we'll see according to our class 10th book. Which one of the following countries is an example of federal system? Sri Lanka तो नुहो. Okay, right answer is, you know, that is India. India is a federal country. Okay, you can remember कि आमर constitution रो कोनोसी भी part रे nowhere it is mentioned about federal system, but still if we look at our provisions of the constitution, easily we can say it is a federal country. Next, in a federal system, how many levels of government are there generally? At least two. Okay, only one, two or more, three or more, only two. Only two hoboni. At least two or more. At least the data rahiba darkar. Okay. Who acts as an umpire in case of disputes between different level of government in a federal system? Okay, think about features of federalism. Ame different features padthile, and one of that feature was eha thila, court have the power to interpret the constitution and the power of different level of government. The highest court act as an umpire. So highest court in India, you know, that is the Supreme Court of India. So right answer will be option C. Sorry. Which of the following is not a key features of federalism? देखिवा, clear division of power. No, it is a feature of federalism because constitution ने completely sources of revenue, then jurisdiction, everything clearly defined होता है. Subordination of the state government, constitutional guarantee to each tier. Yes, constitutional guarantee भी मिली था because division of power, division of legislative, administrative, sources of revenue, everything constitution में mention ही था. हमें पढ़ी चे third features रे, that is the jurisdiction of the respective level of the levels or types of government are specified in the constitution. It means C भी हबनी.
फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जहाँ कहली मु सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट मीन्स राइट आंसर विल बी सबऑर्डिनेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ओके स्टूडेंट्स मु लास्ट सेशन रे भी कही थी बेले बेले कौन हुए ना आमे ऑप्शंस रु जीवा को पड़िबो ओके आमे एलिमिनेशन मेथड यूज करबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर आमे देखिले ए बी सी ऑल आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म इट मीन्स आमे ब्लाइंडली कहि परिबा answer will be option B okay this is the elimination method and it will helps a lot okay बहुत help करे हमको MCQ solve करिबारे okay next which one of the following is a major characteristics of federalism which of the following is the major characteristics of federalism let's see it's a again previous year question the central government has the power to dissolve state government no ये वाली power तो नहीं the central government पाखरे केबे भी पावर नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर परिबो पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट स्टेट्स आर डिपेंडेंट on the center for everything no states are not dependent on the center for everything हमें पढ़ीचे परा that is jurisdiction of specific tiers regarding legislation taxation and administration सब किछि डिवाइड हे थाए तो स्टेट केमती कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन सेंटर ये नुह जुडिशियरी हैज नो रोल इन पावर शेयरिंग नो ये तीनटा हबनी देन राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी दैट इज पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट नेक्स्ट व्हिच टाइप ऑफ फेडरेशन which type of federation do independent states come together to form a bigger unit को टाइप ऑफ फेडरेशन ने इंडिपेंडेंट स्टेट्स come together to form a bigger unit okay we know that two types of federations are there okay the exact balance of power between the central and the state government varies from one federation to another and that depends on what na historical context in which the federation was formed and according to that we know that federations are two type holding together federations and coming together federation एसबु नहीं so in which type of federation do independent states come together to form a bigger unit that is coming together federation right answer will be option B next which of the following countries is an example of coming together federation okay try to remember I mean the example naithle one is the example of USA and second one is the example of India USA this is the example of coming together federation and India this is the example of holding together federation in a holding together federation the powers are equally distributed among all levels concentrated only at the state level unequally distributed with center having more power given only to the local government D तो कदापि होबनी concentrated only at the state level ये भी तो होबनी equally distributed among all level no this is the feature of equally distributed among all level this is the feature of coming together federation and unequally distributed with center having more power okay and that's why मैं इंडिया को कहते it is a quasi federal state okay हमें पढ़िथिले ना quasi federal state I think मने थिबो आम इंडिया को कहीं क्वासी फेडरल स्टेट कहते कहीं ना इंडिया रे सेंट्रल गवर्नमेंट लिटिल बिट मोर पावरफुल बट ता सहित आम यह भी देखी अनइक्वाली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किछिटा स्टेट्स को आम स्पेशल पावर भी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस दृष्टि भी दि जाए सो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन रो बेस्ट फीचर्स हम आंसर हम अनइक्वाली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ द सेंटर हैविंग मोर पावर नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इट्स ए PYQ which one of the following is a holding together federation I have already told you India is the example of holding together federation the Indian constitution describes India as a union of states and is based on the principle of federalism मु सेशन रो स्टार्टिंग रे ही कहली nowhere it is mentioned that federalism इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो कोनोसी भी पार्ट रे फेडरलिज्म शब्द को व्यवहार करा जाई नाही बट जदि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमें भला भाबे एनालिसिस करिबा वी नो दैट most of the provisions are completely based on the principles of federalism that's why Indian constitution describe India as a union of state but our principles गुडिक संपूर्ण फेडरलिज्म प्रिंसिपल्स उपरे बेस which list of the Indian constitution contains subject like defense
फॉरेन अफेयर बैंकिंग एंड करेंसी ओके आपको आम गेस केमती करवा घोषिया किसी भी आवश्यक नहीं जस्ट थिंक यूनियन लिस्ट रे को टाइप रो मैटर को इंक्लूड कराई थाए ना मैटर्स व्हिच आर फ्रॉम ना नेशनल पर्सपेक्टिव और फ्रॉम नेशनल इंपोर्टेंस करेंसी डिफरेंट स्टेट अलग कि नो बैंकिंग डिफरेंट स्टेट पे अलग कि नो फॉरेन अफेयर्स आम इंडिविजुअल स्टेट फॉरेन अफेयर इंटरफेयर करू कि नो डिफेन्स पूरा होल कंट्री पाई गोटे डिफेन्स सिस्टम अच्छे तो ये सब को देखिले आमको लगुच ये सब फ्रॉम द नेशनल इंपोर्टेंस रो फील होची सब्जेक्ट भली इट मीन्स इट इज बिलोंग्स टू यूनियन लिस्ट ओके which tier was added later to the original two-tier system under the Indian Constitution. You know that originally our Constitution provided for a two-tier system of government, that is union government and the state government. Later panchayat and municipalities. Okay, that is 73rd and 74th constitutional amendment रे हमरो local government को introduce कराइथिला. Yes or no? स्टूडेंट्स मुझे डिटेल्स चाहूनी डिस्कसन को बिकॉज आई थिंक मोर देन 120 क्वेश्चंस आर देयर एंड जदि मुझे डिस्कसन करी इन डेप्थ को जाकि डिस्कसन करी दिस सेशन विल बी वेरी लेंदी दैट्स वाई जदि कौन पार्ट रे किसी भी कन्फ्यूजन रोचे देन गो थ्रू माई सिविक्स क्लास 10th सीरीज ओके प्लेलिस्ट मोर यूट्यूब चैनल रे अच्छी देखि नियंतु एक्सप्लेनेशन टी अंडरस्टैंडिंग हो जिवो बहुत भल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जिवो नेक्स्ट Which of the following is a residuary subject? Okay, think about residuary. Residuary subject कौन थिला? Very simple. ना एभली सब्जेक्ट जहाँकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी गला समय रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रा यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट ओके कनकरेंट लिस्ट जदि तीनोटी लिस्ट जो सब्जेक्ट गुड़िक नथिला परवर्ती समय रे अछि आसीची से सब को आम रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स अंडर रे रखु एंड यू नो दैट इफ यू टॉक अबाउट आवर साइबर लॉस एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रायतः 1990s पर ये सब आसी ओके दैट्स व्हाई वी कैन से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इट इज बिलोंग्स टू रेसिडुअरी सब्जेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया आम पढ़ी जे इंडिया रे फेडरलिज्म जदि सक्सेस हेची दैट इज नॉट ओनली फॉर द constitutional provisions okay आमर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स नेचर ऑफ आवर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आपरे बहुत तार श्रेय आम आमर नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को कोले इम्प्लीमेंट करछे ताहा उपर भी बहुत श्रेय जाए ओके इट मीन्स नॉट ओनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट आर्म फोर्स ये सब राइट आंसर हबनी हब कौन दैट इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड शेयर आइडियल्स ओके नेक्स्ट The creation of linguistic states in India was mainly aimed at administrative decentralization, promoting tourism, grouping people with same language together, reducing the number of states. ये तो नुह promoting tourism तो नुह administrative decentralization no it is बेले बेले confusion हुए students दुईटी ऑप्शन भितर जमते ए एंड सी भितर कन्फ्यूजन होची एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन जो हमर लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हेची लिंग्विस्टिक स्टेट्स कांगे फॉर्म हेची लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर्म होबार मेन रीजन थिला ग्रुपिंग पीपल विथ सेम लैंग्वेज टुगेदर सो दैट एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हबो ओके सो दैट विल बी द राइट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज नॉट फॉर्म ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस ड्यू टू द but due to the cultural and geographical reason okay you know that kichi states on the basis of language form heithila and some states are there mostly northeastern states kotha jodi kahiba se subu cultural and geographical reasons so formation heichi so right answer will be you know Nagaland okay Tamil Nadu Andhra Pradesh okay Maharashtra all are formed on the basis of language and you know Andhra Pradesh se to starting heithila आंध्र प्रदेश ही थिला प्रथम स्टेट जी कि लिंग्विस्टिक बेसिस रे स्टेट फॉर्मेशन पे डिमांड करथिला ओके नेक्स्ट इज व्हिच लैंग्वेज वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओके व्हिच लैंग्वेज वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज रिमेंबर वर्तमान ऑफिशियल लैंग्वेज केतोटी अछि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीबा व्हिच लैंग्वेज वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज दैट इज ना हिंदी को रिकॉग्नाइज कराइला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज बट लेटर
बहुत किसी चेंजेस आसी लेट्स सी हाउ मेनी शेड्यूल लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यू नो इंक्लूडिंग हिंदी दैट इज 22 हिंदी को मिसे के टोटल 20 बट 21 प्लस हिंदी आम ये कही पार ओके पिला बहुत कन्फ्यूज होते आपको नहीं हाउ मेनी शेड्यूल लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पिला लिखी आसी 21 नो इंक्लूडिंग हिंदी 21 इट मीन्स राइट आंसर विल बी 22 नेक्स्ट आफ्टर व्हिच ईयर डिड सेंट्रल स्टेट रिलेशंस इंप्रूव सिग्निफिकेंटली इन इंडिया ओके आम सेंटर स्टेट रिलेशन रे पढ़ी 1990s पूर्व आमर डेमोक्रेटिक सिस्टम बा आमे कहि परिबा आवर डेमोक्रेटिक सेटअप कौन थिला नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आफ्टर 1990 केमती चेंज हितला आमे डिस्कस करिथिले दैट इज व्हाट ना बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोalition गवर्नमेंट एंड दैट चेंज or that improved significantly the center state relation so right answer will be 1990 what kind of government became common at the center after 1990 I have already told you coalition type of government coalition era start hitla is not it next which of the following is the third tier of government in India okay you know local government later introduce hitla what is meant by decentralization ना that is transfer of power from people to government no transfer of power from central to state transfer of power from central and state government to the local government okay देखो जदि ऑप्शन सी न थांता ताले मे बी हमें राइट आंसर कहि थांते ऑप्शन बी ओके बिकॉज ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल टू स्टेट गवर्नमेंट भी गोटे से डिसेंट्रलाइजेशन फर्दर डिसेंट्रलाइजेशन करा जाइए बाय ट्रांसफरिंग इट टू द लोकल गवर्नमेंट ओके जदि ऑप्शन सी न थांता राइट आंसर ही थांता ऑप्शन बी but here right answer will be option C okay question रो हमें यह realize कले always answer with reading all those whatever options are there options चारटा को न पढ़ी के केबे भी हमें आंसर तरबर ही के देबानी okay next is in which year was a constitutional amendment made to strengthen decentralization in India रे constitutional amendment को ईयर रे आस्तेला कोन पाई ना टू स्ट्रेंथन डिसेंट्रलाइजेशन यू नो दैट टू स्ट्रेंथन डिसेंट्रलाइजेशन आमे लोकल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करथिले केबे इंट्रोड्यूस करथिले दैट इज इन 1992 73rd constitutional amendment okay and according to that constitutional amendment okay what state government yes different state or local government elections को conduct करिया पे गोटे institution भी form करा जायतला so next question is what institution is created in each state to conduct local election that is state election commission right answer is state election commission okay एहे मन रखिबो गोटे one is election commission of India another is the state election commission Election Commission of India is responsible for conducting three major elections. One is president election, okay. Second one is Lok Sabha election, and next is state legislative assembly election. And if you talk about state election commission, it is responsible for conducting local government election, okay. What is the minimum reservation for women in local government bodies as per 1992 amendment? That is 33% reservation. And recently news has seen 2023 रे bill pass ହେଇଛି 33% reservation after 2029 ଆମର state legislative assembly election and Lok Sabha election रे भी women मानक ପାଇଁ reservation रहिबो. Okay. Next election next ଆମର parliamentary election रे रूल लागू हो बट बर्तमान केवल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज ही आमर 33% रिजर्वेशन अच्छी वुमेन मान नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोविजन दैट स्ट्रेंथन डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया ओके लास्ट ईयर CBSE 2020 क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोविजन दैट स्ट्रेंथन डिसेंट्रलाइजेशन देखिबा रिजर्वेशन सीट्स पर आर्म फोर्स नो applying governors for village councils no
holding regular elections to the local government body, reducing power of municipalities. No, local government, municipalities is the local government, तार power को reduce करके हमें decentralized को strengthen केमती करिवा. So right answer will be option C, holding regular election. पढ़ी थिले limitation part रे, last part रे जे local government बहुत सुंदर भावे इंडिया रे माने इंट्रोड्यूस होइछि हेबा सत्ते भी बहुत आम लिमिटेशंस फेस करछे एंड वन ऑफ दैट इज रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट करा जाउ नहीं बहुत गुडा स्टेट रे. सो होल्डिंग रेगुलर इलेक्शंस टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज रेगुलरली वी कैन स्ट्रेंथन द डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. नेक्स्ट इज अनदर last question, which one of the following is correct regarding the state election commission? Just हम डिस्कस कर देखिबा. It is under the control of election commission of India. It is responsible for conducting Lok Sabha election. No, ये तो कदा भी होबनी. Next, it conduct elections to the local government bodies. Yes, that is the right answer. It appoint governor. No. Then आसिला केबे भी पिले confuse होबनी. स्टेट इलेक्शन कमिशन इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया अंडर रे आसे नाही. रिमेंबर इट. ओके, स्टेट इलेक्शन कमिशन इट कंडक्ट इलेक्शंस टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज. दैट विल बी द राइट आंसर ऑप्शन सी. व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन मेक्स डिसेंट्रलाइजेशन मोर इफेक्टिव? देखिबा, रिजर्वेशन सीट्स इन पार्लियामेंट, नेशनल इमरजेंसी पावर, creation of the third tier of government and creation of Niti Aayog. Which constitutional provision make decentralization more effective in India? India रे decentralization केतेबेला आउरी अधिक इफेक्टिव हला ना जतेबेले थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को फॉर्म करा गला इन 1992. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the rural government popularly known as? Okay, direct question, a very easy question. Rural local government is known as Panchayat Raj and urban local government is known as municipal system. Next, who is the head of the Gram Panchayat? Okay, who is the head of the Gram Panchayat? Gram Panchayat रा head किए ना सरपंच. Okay, then chairperson ना हमारा आसीगला ब्लॉक बा पंचायत समिति रा head को हमें को chairperson, mayor आसी जाउछ हमारा municipal corporation. Okay, next is which body supervise the functioning of Gram Panchayat? Wow, nice question. Which body supervise the functioning of Gram Panchayat? Gram Panchayat mu कहतली it is a executive body. ये तो होची गोटे executive body. Okay, and executive body गोटे body under रे supervise हुए. ओके, कही कौन जिला परिषद तो नुह, लोकसभा तो कदा भी हेनी, एमएलए भी नुह. राइट आंसर इज ग्राम सभा. ओके, एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ग्राम सभा कि ये ग्राम पंचायत बा एग्जीक्यूटिव बॉडी को लोकल गवर्नमेंट रो कौन करिवो ना सुपरवाइज करिवो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्राम सभा? ना टू कलेक्ट टैक्सेस, टू अपॉइंट एमएलए. नो, इलेक्शन हुए एमएलए को पाई. टू अप्रूव बजट एंड रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत. दैट इज द राइट आंसर. टू अप्रूव बजेट, ये बजेट को अप्रूव करे ता सहित ग्राम पंचायत परफॉर्मेंस को रिव्यू करे जहाँ को आम सर्टली कही परिबा दैट इज इट सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द ग्राम पंचायत. हु आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा? हु आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा? ग्राम सभा रे के मेंबर? ग्राम सभा रे मेंबर की मन पका, दैट इज ऑल एडल्ट वोटर्स ऑफ द विलेज. ऑल एडल्ट वोटर्स मीन जो मानकर भी वोटिंग राइट्स अछि गोटे विलेज रो जो मानकर भी वोटिंग राइट्स अच्छी ऑटोमेटिकली से माने ग्राम सभार मेंबर. ओके, एंड एमानकर सुपरविजन रे वर्क करके ना ग्राम पंचायत. ओके, नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जस्ट पूर्व कहली दैट इज मेयर. ओके, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सरपंच होचंदी हमर दैट इज पंचायत. ओके, एंड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से कहार भी चेयरमैन नुहंती, पॉलिटिकल हेड नुहंती, एंड चेयरपर्सन होचंती हमर ब्लॉक रो पंचायत समिति रो. ओके, सो हियर द राइट आंसर विल बी मेयर, द पॉलिटिकल हेड ऑफ ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. ओके स्टूडेंट्स, मु केमती डिस्कस करछि देख, मु गोटे क्वेश्चन आंसर कहबा सहित ऑप्शन को भी मु डिफरेंट कांसेप्ट सहित लिंक करछि. एभली करिया द्वारा कोन हबो ना हम इजीली रिकॉल कर परिबा. ओके, next is which of the following is a positive impact of giving constitutional status to the local government? Okay, which of the following is a positive impact?
ओके पॉजिटिव इंपैक्ट कहार ना जिते आम लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस थे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस केबे मिलला ना 1992 रे थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जिते लोकल गवर्नमेंट को मिलला आर पॉजिटिव इंपैक्ट कौन पड़ला ना इट डिक्लाइन लिटरेसी रेट नो इट इंक्रीज द रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नो इट डिपेंडिंग ऑफ democracy and women representation and ban on political parties no right answer is na yes democracy को आहुरी डिपेंड कला कहीं ना ग्रासरूट लेवल रे लोक माने पार्टिसिपेट करि पाले ता सहित 33% आम रिजर्वेशन भी रहिला वुमेन मानक पई तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन को भी ये इंक्रीज करेला ओके सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी नेक्स्ट एबे हम डिस्कस करबा दैट इज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस ओके First question that is why can't the central government order the state government in a federal setup? Why can't central government कहीं state government को कौन सी प्रकार order दे परिबा नहीं? What is the reason behind that? Because the central government is weak. ना central government weak नुह. Because both are independently answerable to the people. हाँ ये उठे आंसर ही पारे. देखिए आगु कौन ऑप्शन अच्छी? Because states are superior to the center. No कदापि नुह. Because states are not the part of the country. No ये भी नुह. तो right answer कौन हो? Option B. Because both are independently answerable to the people. Okay. Next question is which of the following is a key difference between unitary and federal system? Which of the following is a key difference between unitary and federal system? देखिए कौन? Only federal system have court, then unitary system allow independent states ना कदापि नुह independent states को allow करें unitary systems all are subordinate to the central government. In unitary system subunits are subordinate to the central government yes okay. In a federal system there is only one level of government no federal system रे one level of government नो अधिकार हुए. Which of the following is a key difference between unitary and federal system? Unitary and federal system भितर key difference कौन? Now in unitary system subunits are subordinate to the central government. Unitary system रे कौन होची ना subunit गुड़ी को central government रो subordinate correct and only federal systems have court. तो ए भितरु ए दिटा भितरु कोटा right answer हबो A or C which will be the right answer okay think confusing से पचार जे which of the following is a key difference unitary government रो को features जोगो federal system to ये भिन्न so right answer will be that is now in unitary system subunits are subordinate to the central government that is option C will be the right answer okay okay next question why can the constitution not be unilaterally changed? Why can the constitution not be unilaterally changed by one level government in a federal system? Federal system रे कहीं की unilaterally कौन सी गोटे level of government constitution को change करी परिबे नहीं. Why? Now let's see options are because only the Supreme Court can change it, because changes require consent of both level of government, because states are weaker, because constitution is not important. ये दिटा तो भूल रे आंसर होबनी. Because only the Supreme Court can change it. No federal system रे constitution रे जदि हम किछि चेंजेस आनिया पय चाहूचे नुह जे केवल Supreme Court हिया को चेंज करि परिबो. We need the consent of now both level of government. This is one of the major feature of federal system. Okay, the right answer will be option B. Next, financial autonomy in a federal system is ensured by. Okay, federal system रे हमें financial autonomy को केमिति ensure करछे देखिबा specify हेता constitution रे everything. Let's see, allowing central government to control all tax ना आदर तो हबनी financial autonomy. Giving loans to the state no, providing funds through judiciary no. The right answer will be clearly specifying sources of revenue for each tier of government. Constitution रे everything clearly mention हेता है. Okay. Next is what is the key difference between what is the okay what is the key difference between two types of federations described? Let's see. One is based on dictatorship, the other on democracy.
One forms by separation, other by unification. One is formed by voluntary unification of state, other by distribution of power within a country. One has monarchy and one does not. Okay, right answer will be, you know that two type of federations are there. One is coming together federation. को केस रे हुए ना जेतेबेले voluntarily different states unified होते and holding together federation ना जेतेबेले गोटे big state तार power को distribute करे. So right answer will be option C. In which type of federation do some constituent units enjoy special power? Okay, in which type of federation some constituent units, okay, किछिटा unit बा किछिटा state and local level government टिके special power enjoy करंती कोठी ना, you know that is in holding together federation. India रे भी से जिनस possible. That's why हमें हमरो किछिटी states को हमें special power देइचे, जेमते हमें कहि परबे example नै परबा J&K, okay, north eastern states, okay, सब example हे परबे. Next बा हमें union territories को भी कहि परबा. Next, if a law on education passed by the state government conflict with central law on the same subject, which prevails? Okay, you know that education हमारा आसी जाए कहाँ अंडर रे ना concurrent list रे, and concurrent रो कौनसी subject को नहीं जेते बड़े conflict आसे कौन को आ जाए थिला कौन हबा ना कहारो decision final, कहा decision को final वाली consider करा जिवो ना center, that is central law. Answer will be option B. Okay, state law hoboni, the law with later date of enactment hoboni, the law with greater public support, no, central law, that is option B will be the right answer. Next, union territories in India have same power as states, no, जेहेतु छोटो ताको किछि स्पेशल पावर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा माने रन होथांती, are administered directly by the central government. Yes, this is correct. Can amend the constitution unilaterally? No, केही भी amend करि परिबेनी constitution को इभली. Lie outside the jurisdiction of parliament? No, इभली no. Right answer will be option B. What was the initial reaction of national leaders towards the demand of linguistic states? You know that linguistic states को नहीं क्या हमें discuss करथिले, that is कौन linguistic states को नहीं क्या हमें discuss करथिले ना, ये थिला हम पई प्रथम challenge. Creation of the linguistic states was the first and a major test for democratic politics of our country. आमर country form हेबार मात्र किछि वर्ष भितरे हम पई सबटु big challenge आस्थिला, that is the demand for the linguistic states. काहे कि मन रे भय थिला national leaders मानकर जे language basis रे state division हे जिवनी तो. Okay, so what was the initial reaction of national leader? Initial response कौन थिला ना, immediate acceptance, no, complete ignorance, no, resistance to the fear of disintegration. Yes, काले quantity disintegrate ही जिवो ए भयटी समस्तन को मन रे थिला. That's why right answer will be option C. Next, according to the passage, okay, you can use your book according to the book passage. According to the passage, what has the formation of linguistic states proven over time? Okay, भय तो थिला linguistic states रे form हेले integration country रो unity and integration प्रति भय सृष्टि हबो, but what it prevents over the time? It divided the country, no. It weakened the national unity, no. It made country more united and easier to administer. Okay, so right answer will be option C. Why did the constitution not declare Hindi as the national language? Okay, why did the constitution not declare Hindi as the national language? Kahe ki na only 40% of Indian had Hindi as their mother tongue. That was the reason. What step did the central government take in 1965 in response to non-Hindi speaking states demand? Kahe ki 1965 रे decide करा जाइथिला जे हमें इंग्लिश को डिस्कंटिन्यू करिबा as the official language, but non Hindi speaking states मानकर डिमांड थिला ताको कंटिन्यू करिया. What step did the central government take in 1965? Now that is continue to the use of English along with Hindi. Okay, right answer will be option C. Next, why the state government unable to exercise their autonomy before 1990?
ओके 1990 पूर्व 1990s पर आसला कौन ना कोआलिशन एरा ओके रिमेंबर कोआलिशन एरा आसला आफ्टर 1990 बिफोर दैट ना सेम पार्टी रूल करथले दैट इज बोथ इन सेंटर एंड स्टेट लेवल जोथि पई स्टेट लेवल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली ऑटोनोमस वे रे पावर को एक्सरसाइज करि पारु नथिले दैट वाज द प्रॉब्लम बिफोर 1990 हाउ डिड द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज अफेक्ट इंडियन फेडरलिज्म ओके रीजनल पार्टीज फॉर्म हेबा द्वारा कोन होला रीजनल पार्टीज माने जेतेबेले पॉपुलर हेबा को लागिले स्टेट रे रीजनल पार्टीज फॉर्म होला सेंटर रे कोनोसे सिंगल पार्टी मेजॉरिटी आनी पाला नाही जोथि पई फॉर्मेशन होला कोआलिशन गवर्नमेंट एंड आर पॉजिटिव इंपैक्ट कौन थिला हाउ डिड द राइज ऑफ रीजनल पार्टी अफेक्ट द इंडियन फेडरलिज्म ना इट स्ट्रेंथन द इंडियन फेडरलिज्म ओके इट स्ट्रेंथन the power sharing and state autonomy so right answer will be option C next why is decentralization necessary in India okay why is decentralization necessary because India has small population no to increase the power of central government no सेंट्रल गवर्नमेंट पावर को इंक्रीज करिया नो सेंट्रल गवर्नमेंट पावर को डिसेंट्रलाइज करिया आम इंडिया रे डिसेंट्रलाइजेशन को आम इंट्रोड्यूस करते टू सॉल्व द लोकल प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली एंड टू avoid democratic participation no to avoid democratic participation no to increase democratic participation to inculcate grassroots level democracy okay the right answer will be that is to solve the problems effectively because we have already discussed local level रे ही आमे जानि थाउ जे मेजर प्रॉब्लम कोन एंड केमिति आमे रिसोर्सेस को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करि परबा दैट्स व्हाई टू सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली डिसेंट्रलाइजेशन is necessary in India. Okay, next is देखिबा किछि last year questions. First one, what is the basic idea behind decentralization? Okay, to concentrate power? No. To give less importance to the local government? No. To settle all issues at national level? No. To settle local issues at the local level? Yes, that is the correct answer. Okay, to solve local problems effectively. Next, which one of the following is an example of the decentralization of power? Example of decentralization of power. देखिबा formation of the linguistic states, creating a new state by dividing existing one, introduction of panchayat raj system, sharing power between the union and state government. Example of decentralization power देखो again C D भितर confusion होबा but better answer होची हमरा that is introduction of the panchayat raj system. Okay, further हमरो जो पावर को डिसेंट्रलाइज कराइतला राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी नेक्स्ट व्हाई वर इलेक्शंस टू द लोकल बॉडीज मेड मैंडेटरी आफ्टर 1992 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट काहेकि बिकॉज आम डिस्कस करथिले 1950s रु ओके राजस्थान भली स्टेट रे ऑलरेडी लोकल गवर्नमेंट फॉर्म हे सारथिला बट प्रॉब्लम कोन थिला ना डिफरेंट स्टेट्स रे लोकल बॉडी पाई जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन कथा हो बा इलेक्शंस कथा हो ताको रेगुलरली कंडक्ट करा जाउ नथिला दैट वाज द मेन प्रॉब्लम जोति पाई कि आमे ग्रासरूट लेवल रे लोकंकर इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करिया पे आमे 1992 रे आमे कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी करदेले फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट ओके सो व्हाई वर इलेक्शंस टू द लोकल गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज मेड मैंडेटरी राइट आंसर विल बी टू make democracy more participatory at the grassroots level. Okay, next is what is the significance of reserving seats for SC, ST and OBC? कौन से मानक पाई SC, ST, OBC and women मानक पाई सीट रिजर्व करा जिबार पछर मुख्य कारण कौन तार इंपोर्टेंस कौन that is to ensure social justice and to improve political representation. Okay, next is which of the following is true regarding gram sabha okay gram sabha विषय कौन true को statement correct it elect member of the lok sabha no it supervise the work of village panchayat yes that is the correct answer ये village panchayat local level रा executive body को gram sabha कौन करे ना supervise करे okay next इबे डिस्कस करिबा किछटा comprehension
बेस्ट क्वेश्चंस ओके स्टूडेंट्स मुझे किसी सजेशन देवाई चाहिए जिते बड़े भी आम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करुचे इट्स माय सजेशन ऑलवेज कीप योर बुक विथ योर सेल्फ बुक निज पाखे रख बिकॉज तुम देखिपार ईच एंड एवरी क्वेश्चन मोर पूरा प्रॉपर सीक्वेंस रे अच्छी गोटे टॉपिक पर गोटे टॉपिक कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करिया फास्ट टू टिल लास्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करिया फास्ट टू टिल लास्ट गोटे पर गोटे कांसेप्ट सीक्वेंसली अच्छी ओके एंड जते बेले भी कोनोसी क्वेश्चन इंपोर्टेंट तुमको लागुची जे हां ए पार्ट टू भी गोटे क्वेश्चन हेई परिबो तुम गेस करि पार नथिले जे हां ये भी गोटे क्वेश्चन हेई परिबो सेही भली पार्ट रे मार्कर रे हाइलाइट करो ओके जते बेले तुम बारंबार एग्जाम समय तो मो वीडियो बारंबार एते समय देखि पारिबनी से समय जो बुक रीडिंग करिबो इजिली यू कैन रिकॉल कि हाँ ए पार्ट भी गोटे क्वेश्चन ही पारे ओके दैट्स व्हाई माय सजेशन ऑलवेज कीप योर बुक विथ योरसेल्फ नेक्स्ट व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब हाउ पावर इज डिवाइडेड इन ए फेडरल सिस्टम व्हिच सिस्टम बेस्ट डिस्क्राइब हाउ पावर इज डिवाइडेड इन ए फेडरल सिस्टम लेट्स सी द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड ऑल द पावर नो both central and state government derive their power from the people and are independently answerable to them yes that is the correct answer बहुत बड़े sentence लिखा है that is both central and state government derive their power from the people and they are independently answerable to them okay that is the correct answer the state government are answerable to the central government ना एमती नुह सबोर्डिनेट नुहति तो सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न ऑल इश्यूज एट ऑल लेवल नो पावर तो डिसेंट्रलाइज कराई सब्जेक्ट्स को तो डिवाइड कराई अंडर यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट केमती सब इश्यूज को ऑल लेवल रो गवर्न करिवो नो आंसर विल बी ऑप्शन बी व्हाट कुड हैपन इफ इंडिया फॉलोड ए यूनिटरी सिस्टम लाइक श्रीलंका भली यूनिटरी सिस्टम हेतले कोन हितांता ना झगड़ा हितांता क्लास हितांता सिविल वार हितांता लेट्स सी ना स्टेट शुड हैव मोर ऑटोनॉमी नो द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड नॉट इंटरफेयर in state matter ना अधिका इंटरफेयर करता था सेंट्रल गवर्नमेंट वुड होल्ड मोस्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग पावर ओके एंड लोकल बॉडीज वुड बिकम स्ट्रंगर ये तो कदा भी होबो नहीं लोकल बॉडी केमती स्ट्रांग होबो ये तो करेक्ट आंसर नुह स्टेट वुड हैव मोर ऑटोनॉमी ये भी आंसर नुह व्हाट वुड हैपन इफ इंडिया फॉलोड ए यूनिटरी सिस्टम लाइक श्रीलंका कौन होबो सेंट्रल गवर्नमेंट वुड नॉट इंटरफेयर इन स्टेट मैटर नो अधिका इंटरफेयर करिवो तो कौन होबो what would happen now the central government would hold most of the decision making power central government गोटे कौन ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट ओके गोटे ऑटोक्रेटिक वे रे शासन करिवो सो आंसर विल बी ऑप्शन सी व्हाट डज jurisdiction mean in the context of federalism what do you mean by jurisdiction माने कौन थिला ना power and responsibilities assigned to a particular level of government okay the area of power the area of responsibilities assigned to the level of government that is the correct answer the meaning of jurisdiction okay next what is the dual objective of federalism okay last feature thila can you remember it what is the dual objective to promote unity and with that we have to accommodate regional diversity unity को हमें ध्यान देवा सह diversity को भी हमें respect देवा दरकार that is the main objective of federalism next why did independent states form a coming together federation like the USA okay they are pulling their sovereignty to with retaining their identity to increase security that is the करेक्ट आंसर ओके से माने सोवेरेंटी को शेयर करंती बट निजर आइडेंटिटी को रिटेन करी काहे के भली करंती ना टू इंक्रीज द सिक्योरिटी सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी नेक्स्ट व्हाट हिस्टोरिकल फैक्टर अफेक्ट द बैलेंस ऑफ पावर इन फेडरेशन व्हाट हिस्टोरिकल फैक्टर अफेक्ट द बैलेंस ऑफ पावर इन फेडरेशन को हिस्टोरिकल फैक्टर ऊपर डिपेंड करे ना ये डिपेंड करे जे से फेडरेशन टे केमिति फॉर्म हेछि दैट इज द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन व्हिच द फेडरेशन वाज फॉर्म दैट विल बी द राइट आंसर ऑप्शन सी which of these procedures is required to amend the federal power sharing provisions in India which of this procedure is required to amend the federal sharing provisions in India देखिबा simple majority in Lok Sabha simple majority in both the houses of parliament okay मैं टिके रिमाइंड करिया पई चाहिबी
कौन क्या आमेंड करने क्वेश्चन कराई ना फेडरल पावर शेयरिंग इंडिया रे जो फेडरल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अच्छी से किसी चेंज करने आमको कौन प्रोसीजर दरकार ओके रिकॉल करो फेडरल शेयरिंग provisions in India it is belongs to fundamental provision it is belongs to fundamental provision okay and आमे डिस्कस करथिले fundamental provision को unilaterally केबे भी चेंज करा जाई परिबो नाही okay it need 2/3 majority in both houses it means parliament कथा को आउची central government रे दरकार ए बिल टी पास हवा दरकार ता सहित हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर रे ये रेटिफाइड भी हेबा दरकार सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी इट्स अ नाइस क्वेश्चन नेक्स्ट स्पेशल स्टेटस एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर's own constitution okay illustrate that all states have identical power no india रे भली नुह residuary powers lies with state no it lies with center holding together federation can grant unequal powers to units holding together federation unequal power ग्रांट करि परिबोनी नो एमती नुह आमे जानिचे जे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन रे अनइक्वल पावर्स करा जाए शेयर करा जाए ओके एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस दृष्टि सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी एंड यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट कैन बी अमेंडेड बाय द स्टेट ना ये केमती हबो यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट को केमिति स्टेट अमेंड करिवो सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी दैट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कैन ग्रांट अनइक्वल पावर टू यूनिट्स ओके हम जेमति कहली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जम्मू एंड कश्मीर एमान को स्पेशल status special power दिया जाइए next question number 10 that is which of the following best explain why federalism in India succeeded okay हमें डिस्कस करथिले इंडिया रे फेडरलिज्म काहे की सक्सेस हिची not only because of the constitutional provision the spirit of federalism nature of our democratic politics that plays the most important role the spirit of federalism became a shared ideal ओके बिकेम ए शेयर आइडियल समस्ते चाहिए जब फेडरलिज्म सिस्टम आम परस्पर राइट्स को रेस्पेक्ट देवा परस्पर डाइवर्सिटीज को आम रेस्पेक्ट देवा सो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म आवर नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ओके दैट हेल्प्स अ लॉट नेक्स्ट व्हाट रोल डिड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स प्ले इन इंडियन फेडरलिज्म रिड्यूस स्टेट ऑटोनॉमी नो मेड डिसइंटीग्रेशन इनएविटेबल नो एंश्योर्ड शेयर आइडियल्स एंड रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी यस ये ensured share ideals and respect for diversity okay that is the spirit of our federalism जोति पय हमर फेडरलिज्म इंडिया रे सक्सेस ही पड़ची नेक्स्ट which of the following was different about India's approach compared to the Sri Lanka compare करिबा इंडिया impose हिंदी slowly while Sri Lanka did not know हिंदी को impose करा जाय नाही ओके हिंदी को प्रमोट करा जाय छी but impose करा जाए नहीं इंडिया allowed flexibility and avoided imposition of a single language yes that is correct इंडिया flexibility को allow करची ओके जी जेमती जहाँ डिमांड कले तांको डिमांड को accept करा गला ओके नेक्स्ट ऑप्शन कौन थिला इंडिया डिक्लेयर्ड ऑल लैंग्वेजेस ऑफिशियल इंडिया गेव तमिल द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज नो इंडिया डिक्लेयर्ड ऑल लैंग्वेजेस ऑफिशियल सब लैंग्वेज नो 22 लैंग्वेज को ऑफिशियल डिक्लेयर करा हितला सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिफरेंट अबाउट India's approach compared to Sri Lanka na India allowed flexibility and avoided imposition of a single language कौन से single language का ऊपर impose करा जाए नथिला ओके 22 major languages को आमे official language भावे आमे ग्रहण करथिले ओके that was the stand of India next is question number 13 why was there violent reaction in Tamil Nadu in 1965 तमिलनाडु रे 1965 रे काहे की कौन हितला काहे वायलेंट रिएक्शन थिला गवर्नमेंट रो काहे 1965 रे कौन होतला ना 1965 रे हिंदी सॉरी इंग्लिश as the official language जो थिला ताको बंद करिया पे डिसीजन नेबार थिला जोथि पई साउथ स्टेट तमिलनाडु बहुत ओपोज आसेला ओके हिंदी वाज बीइंग इम्पोज्ड एंड इंग्लिश वाज टू बी डिसकंटिन्यूड ये थिला रीजन ओके जोथि पई बहुत बड़ पोजीशन आस्तिला इंडिया रे What was the misuse of the constitution by the center before 1990? Before 1990 center constitution को केमती misuse करथला काहे कि ना center and state both रे जते बेले सेम पॉलिटिकल पार्टी थिला स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज बा स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस वे रे पावर को एंजॉय करि पार नथले एंड जो स्टेट्स मानकरे राइवल पार्टीज रहथला से स्टेट मानकरे
बा से स्टेट माननकु सेंट्रल गवर्नमेंट सेतिकी बा तांको कथा को सेतिकी सुन नथलो बा से स्टेट्स माननकर प्रति सेंट्रल गवर्नमेंट रो उद्देश्य टिके लिटिल बिट डिफरेंट थिला हाँ that is dismissing the state governments of rival parties. Okay, that will be the right answer. Next, what role did the Supreme Court play in strengthening federalism? Okay, umpire हम पढ़िथिले Supreme Court रोल कौन थिला फेडरलिज्म को strengthen करिवारे. It support president rule? No. It gave states unlimited power? No. It prevented arbitrary dismissal of state government. It made coalition government mandatory. No, coalition government को mandatory नुह situation असले form होबो. Right answer will be it prevented arbitrary dismissal of the state government. Okay, state governments मानको जो state rival parties माने थिले से मानको जो अनदेखा करा जाउथला ताकू केमदी arbitrary manner रे ताकू केमदी prevent करा जाय परिबो. Okay, से regarding Supreme Court रो decision बहुत better थिला. So it prevented arbitrary dismissal of the state government. That will be the right answer. What is the primary purpose of creating third tier of government? Third tier of government रो main objective कौन थिला बहुत गुडे objective थिला देखिबा भितरु कोडा correct answer हबो. To reduce the power of the state government? No. To improve the foreign relation? No. To allow better governance at the local level? Yes. Democratic participation हे परिबो local level people they know everything about their local issues. They know how to use their resources very effectively to allow better governance at the local level. Next, Rina, a Dalit woman who wishes to contest panchayat election. Okay, se panchayat election contest kare this type of questions are generally बहुत एबे आसुची मैं exam रे देखुची. Okay, how has the 1992 amendment help her? Rina जे कि गोटे दलित woman सी पंचायत इलेक्शन रे पार्टिसिपेट करिया पई चाहूची तो 1992 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ताको केमती हेल्प करिवे देखिबा. सी कैन नॉट कॉन्टेस्ट? नो, इभली हबनी. सी नीड स्पेशल परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू पार्टिसिपेट? नो. सी कैन कॉन्टेस्ट इजीली as seats are reserved for SCs and women. Yes, we know that SC, ST, women समस्त पई जेहेतु सीट्स रिजर्व अछि अकॉर्डिंग टू 1992 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सी बहुत हेल्प करिवो रिना को पंचायत इलेक्शन रे कॉन्टेस्ट करिवारे. ओके, next question is, if a state refuses to conduct panchayat election in every 5 years, which institution can take action? Okay, remember panchayat election को के conduct करे, local government election को के conduct करे. Okay, that is state election commission. So के action नबो, which institution? Obviously state election commission. If state refuses to conduct panchayat election in every 5 years, which institution can take action? That is the state election commission. Okay, next is Ramesh lives in a city and wants to approach his local government for sanitation issue. Okay, Ramesh जी के city रे रहउची से local government को approach करिया पई चाहूची regarding sanitation. Who is most likely the elected political head he should contact? कहा को contact करिवो से सरपंच नो ये तो आसीला हमरो rural local government MP ना MLA ना मेयर. ऑब्वियसली मेयर कहीं ना सिटी रे जाने पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सिटी कथा जदि आमे कहबा देन दैट पर्सन इज मेयर. तो ऑब्वियसली से अप्रोच करिवो का ना मेयर. राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी. ए डिस्ट्रिक्ट हैज मल्टीपल ग्राम पंचायत. व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ लोकल गवर्नमेंट अबव देम? ओके, a district has multiple gram panchayat. क्वेश्चन को कंफ्यूज कराई जे डिस्ट्रिक्ट हैज मल्टीपल पंचायत किछि मैटर करिन. दैट इज ग्राम पंचायत रो नेक्स्ट लेवल लोकल गवर्नमेंट पचराई जे सिंपल. दैट इज आंसर इज पंचायत समिति एंड ब्लॉक मंडल. जस्ट कंफ्यूज करिया पे एते से लिखाई छी. ओके, एवली क्वेश्चन को टिके भाबी चिंते आंसर दबो, अदरवाइज मुंडो रे पसिबोनी डिफिकल्ट फील हबो. नेक्स्ट, despite regular elections local self government is not fully effective. Despite regular election, obviously local self government ପାଇଁ ଯଦି regular election न हबो ताले obviously effectively work करि परिबो नाही. What is the main reason for this? People boycott election, state government have not given adequate power and resources, local leaders are not elected, and gram sabha are held every month. Okay, कौन कहा जाउची despite regular election हेबा सत्वे भी काहे कि लोकल गवर्नमेंट बहुत इफेक्टिवली वर्क करि पारो नाही. ओके, सॉरी टिके मु क्वेश्चन टिको रॉन्गली इंटरप्रेट कली. दैट इज डिस्पाइट रेगुलर इलेक्शंस
रेगुलर इलेक्शंस हेबा सत्वे भी कहीं लोकल गवर्नमेंट फुल्ली इफेक्टिवली वर्क करि पारु नाही. व्हाट इज द मेन रीजन फॉर दैट? बिकॉज पीपल बॉयकॉट इलेक्शन. देखिबा कोन मेजर ऑप्शन हे परिबो. स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट गिवन एडिक्वेट पावर एंड रिसोर्सेस. हां हे पारे रेगुलर इलेक्शन हेबा सत्वे भी जदि स्टेट तार पावर एंड रिसोर्सेस को लोकल गवर्नमेंट सहित शेयर न करिवो तो लोकल गवर्नमेंट इफेक्टिवली वर्क केमिति करिवो. लागुची बी गोटे आंसर हे परिबो. देखिबा आगु कोन छै लोकल लीडर्स आर नॉट इलेक्टेड, ग्राम सभास आर हेल्ड एवरी मंथ. तो ये भितर लगुच आमको ओजनदार पॉइंट होची दैट इज ऑप्शन बी. स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट गिवन एडिक्वेट पावर्स एंड रिसोर्सेस. दैट इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Sima, a village resident, wants to question the misuse of panchayat fund. Okay, panchayat fund को misuse करा होचे तापरे से question raise करे अपन जाऊँगी कि Sima, a village resident, which platform gives her the right to do so directly? लोकसभा रे डिस्कस करियो. नो हाई कोर्ट रे, नो जिला परिषद, नो हम जानि जे that is ग्राम सभा. बिकॉज ग्राम सभा ग्राम पंचायत रो फंड बा बजेट को एलोकेट करे बा सुपरवाइज करे. तो ऑब्वियसली सीमा से कंसर्न टी कहा सामने उठे ऑब्वियसली ग्राम सभा विल बी राइट आंसर. द लार्ज नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एट द लोकल लेवल प्रूव्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ डेमोक्रेसी, इंडियाज कमिटमेंट टू ग्रासरूट डेमोक्रेसी, स्टेट कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस. लार्ज नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एट द लोकल लेवल. जिते लोकल लेवल रे आमे बहुत जन रिप्रेजेंटेटिव्स मानन को इलेक्ट करूचे आ द्वारा हमर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होचे. नो डेमोक्रेसी क्षय हो, लैक ऑफ डेमोक्रेसी. नो इंडियाज कमिटमेंट टू ग्रासरूट डेमोक्रेसी. येस जिते आमे बहुत लोकल लेवल रिप्रेजेंटेटिव्स मान को इलेक्ट करछे आ द्वारा हमर ग्रासरूट डेमोक्रेसी आहुरी स्ट्रेंथन होची. दैट्स व्हाई इंडियाज कमिटमेंट टू ग्रासरूट डेमोक्रेसी टू इनकल्केट डेमोक्रेटिक हैबिट बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करछी. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज which of the following is a major challenge faced by the local self government in India? Major challenge कौन major challenge? Regular election no, ये तो major challenge no. Lack of interest of voters हे पारे देखिबा. Inadequate transfer of power and resources by the state government and high voter turnout ये भी तो नुह. B C भी तो देखिबा कोटा better option हे पारिबो. Which of the following is a major challenge faced by the local self governments in India? India रे प्रायतः local self government को regarding major challenge face करंती. That is inadequate transfer of power and resources by the state government. State government माने adequate power and resources local government सह share करू नाहंती. That is a major challenge and we need to address it. That will be the right answer. देखो ऑप्शन बी भी ही पारिबो बट बी सी को जदि हम कंपेयर करिबा सी ठीक है लिटिल बिट मोर अप्रोप्रिएट आंसर हबो. ओके नेक्स्ट इज स्किल बेस्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. ओके ये टाइप रो क्वेश्चन एबे बहुत आछे एग्जाम रे. सो लेट्स सी इमेजिन ए सिचुएशन वेयर द स्टेट गवर्नमेंट वांट्स टू इंट्रोड्यूस ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी. ओके imagine a situation where a state government wants to introduce a new education policy in a federal setup. What would be the process? Okay, education we know that it is belongs to concurrent list. स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन नहीं पारिबो, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन नहीं पारिबो, बट स्टेट गवर्नमेंट चाहूची जे न्यू एजुकेशन पॉलिसी रे किछि इंट्रोड्यूस करिया पे कोन प्रोसेस रहबो देखिबा. द स्टेट वुड नीड द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल, द स्टेट वुड रिक्वायर परमिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द स्टेट कैन इंप्लीमेंट इट इंडिपेंडेंटली. If it falls under its power, the central government will directly implement it. कौन हम जिते स्टेट गवर्नमेंट चाहूँ इंट्रोड्यूस करने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, द स्टेट कैन इम्प्लीमेंट इट इंडिपेंडेंटली इफ इट फॉल्स अंडर इट्स पावर. कहीं आम कनकरेन्ट लिस्ट आम देखीचे स्टेट गवर्नमेंट भी संपूर्ण अधिकार अच्छी से निज पावर को एक्सरसाइज कर. हाँ डिस्प्यूट्स आसिले से आमर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन विल बी फाइनल. ओके नेक्स्ट इज assertion. In a federal system, both central and state government are accountable to the people independently, correct? Okay. The constitution provides power to both level of government independently. Yes, correct. Right answer will be both are correct. R is the correct explanation of A. Okay. मु last session रे कहिछि assertion and reason based questions को आमे केमति solve करबा details सिबिनी. Okay, first we have to check whether assertion and reason both are correct or not, and correct कि नॉट आम जानी सारा पर आम देखा रिजन
केते दूर जस्टिफाई करछि असर्शन को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज that is another assertion and reason. Unitary system has only one level of government, correct? Okay, the state governments are autonomous, not subordinate to the central government. No, state government autonomous no, not sub semane completely central government ko subordinate. This is wrong. It means A is true, R is false. Okay, next, suppose conflict arises between the central and the state government over taxation rights. According to the federal principles, who will resolve the issue? Parliament, Prime Minister, Supreme Court and State Assembly. Over taxation rights, the central government, state government भितर जदि conflict आसिला, okay, federal setup रे हमें जानिचे court होचे, Supreme Court होचे umpire. Okay, so who will resolve the issue? Obviously the Supreme Court. Okay, answer will be option C. Next, if one government level tries to change a fundamental provisions of the constitution on its own, fundamental provisions unilaterally, if one government level try to change unilaterally, okay, asambhav, what would that indicate? The country is following federalism? No. The government is acting within limits? No. Limit baharu, limit cross kurchi, limit भितर कोठी काम करछि. Violation of the federal principle, yes, federalism principle को संपूर्ण violate होछि. हम just discuss कले हमर fundamental provision रे कोन थिला? Balance of power. Okay, balance of power between central government and state government. हम discuss करथले या होछि हमर fundamental provision. एथरे चेंजेस आने पे कोन दरकार ना पार्लियामेंट रे पास हवा दरकार, हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफाई हवा दरकार. तो यूनिलेटरली केमती चेंज हो? जदि यूनिलेटरली चेंज होछि वायोलेशन करछि फेडरल प्रिंसिपल्स को. ओके, राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी. नेक्स्ट, इन ए फेडरल सिस्टम पावर एंड रेवेन्यू सोर्सेस आर क्लियरली डिवाइडेड. यस, करेक्ट. पावर सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू क्लियरली डिवाइड कराई छि, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है. दिस हेल्प्स टू एंश्योर फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस ऑफ बोथ लेवल. करेक्ट, both and R are true and R is the correct explanation of A will be right answer. Next, an ideal federal system require mutual trust and agreement to live together. Obviously federal system को success करिया पे हेले हमारा nature of our democratic politics, it means how we are implementing it, हमारा trust, हमारा परस्परंकर diversity प्रति हमारा respect, ये तो बहुत important. Okay, correct. Only the central government is responsible for maintaining the unity in federal country. Wrong. केवल central government no, समस्त responsible, government responsible, people को responsible, state government responsible. So right answer will be A is true, but R is false. Next, suppose a new country is formed by uniting several independent provinces that all want equal say in the national government. What kind of federation is this? Obviously this is known as coming together federation. हम पढ़ितले coming together federation ही हमर several independent states माने मिसी form करंती government बा country. If a federal country like India gives more autonomy to Jammu and Kashmir than to other state, what does this show? ये कौन शो करछि? Center is weak. That's why किछि states को से बाध्य होई autonomous तो होछि. All states are equal. Special power can be granted in holding together federation or it is coming together federation. कौन? ये कहा को signify करछि? ना ये signify करछि, that is, now you know that in holding together federation, special power can be granted in holding together federation because of the administrative convenience. Okay, next, assertion reason again, that is, in a coming together federation, all constituent states usually have equal power. In coming together federation, yes, coming together federation is almost equal power enjoy करते. Correct. The states voluntarily come together and retain their sovereignty. Yes, that's why they are enjoying equal power. Both A and AR are true. R is the correct explanation of A. Right answer will be A. Okay. The next is in holding together federation, the center is more powerful. Yes, little bit more powerful. That's why we are calling India as the quasi-federal state. Such federations are formed by granting independence to the local government to govern themselves completely. Such federations are formed by granting independence to local government to govern themselves completely. Na, completely no. Okay, completely no. किसी subject share कराया था. So here answer will be
A is true but R is false. Okay, it is true अच्छी but it R T false. Okay, next. A new technology subject emerged after independence. Under the Indian Federalism it falls under. पढ़ीचे स्टेट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट ए सबुथिरे जो सब्जेक्ट गुड़िक अच्छी ऑलरेडी इंडिपेंडेंस समय जो आम कन्स्टिट्यूशन को तैयारी करागला आम डिफरेंट सब्जेक्ट को इनक्लूड कर कौन भी सब्जेक्ट इमर्ज कर आफ्टर इंडिपेंडेंस ताको आम रखा रेसिडुआरी पावर जहाँ उपर संपूर्ण पावर एंजॉय करके ना यूनियन गवर्नमेंट. तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी. A dispute arises between state and central over irrigation policy. To resolve it, they must approach. क्या approach करिवे? Obviously, Supreme Court को किंबा जदि two state भितर ही थी relevant High Court रे भी आपको raise करा जाए पारिबो. Results जदि resolve न हुए, solve न हुए, Supreme Court ताको नबो case to handle करिबो. Okay, President no, Prime Minister Office no, Election Commission ला आज तक किसी लेना देना नहीं. Okay, next. The Constitution 3 list guarantee a clear division of legislative power. Yes, correct. The subject not mentioned in any list automatically becomes state subject. No, it belongs to हमें justice कले. It belongs to क्या गला? अच्छा, ऊपर रह गला. Okay, sorry. Subject not mentioned in any list automatically become state subject. No, आप हैं अच्छे हमारा residuary subject जे के आसे कहाँ अंडर रे ना central government अंडर रे आसे. Central government power enjoy करें. Okay, so right answer will be A is true, R is false. Okay, right answer will be option C. Next, that is amendment to core federal provisions need ratification by state legislature. State legislature have a special power to veto all constitutional amendment. Special power to veto all constitutional amendment. No, all constitutional amendment ऊपर state legislature special power enjoy करे नहीं. Yes, amendment to core federal provisions, core federal provisions कथा जदि कहिबा बा fundamental provision कथा जदि कहिबा state legislature ratification आवश्यक. Okay, so A is the right answer, right statement, but R is false. Option is C. C will be the right answer. Suppose a group of people demands a new state based on shared culture and geography rather than language based on past experience. How might the Indian government respond? Indian government केमती respond करियो देखिबा immediately reject the demand एभल तो हबनी. Consider it as possible way to improve governance and unity. Ban cultural group. Merge the group with another state forcibly. No, ये सब proper decision हबनी. कौन करा जिबा ना कनसीडर आकु करा जिवो देखा जिवो जे पॉसिबल वे जे हमें केमिति हमें गवर्नेंस को इंप्रूव करि परिबा यूनिटी को हमें स्ट्रेंथन करि परिबा देन तापर गवर्नमेंट वर्क करिवो. दैट विल बी द करेक्ट मेजर और द करेक्ट स्टैंड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. ओके, नेक्स्ट इज इन 2000 three new states that is Jharkhand, Chhattisgarh and Uttarakhand were created. This reflect which aspects of Indian federalism? Okay, only linguistic criteria, state boundaries of state, respect for ethnic group and diversity, and centralization of power. Jharkhand, Chhattisgarh and Uttarakhand 2000 फॉर्म करा जाइथिला एंड ये रिफ्लेक्ट करूची जे आमे हमर एथनिक एंड जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज को आमे केते रेस्पेक्ट होचे एंड दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ दिस रीजन ही आमे फॉर्म कले झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड. नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स मेड इंडिया मोर यूनाइटेड. करेक्ट. इट अलाउड पीपल with common language and culture to govern together. Yes, that is the reason because of which परवर्ती समय देखिले जे linguistic states made India more united. So both A and R are true and R is the correct explanation of A. That will be the correct answer. Next, Federalism India is successful only because of constitutional provision. Only because of constitutional provision. No, एमती तो नुहा. Without democratic practice, constitutional rules have no real meaning. Yes, correct. Okay. Without democratic practice, किछि भी rules regulations थिले कौन होबो? Okay, so federalism in India is successful only because of constitutional provision. A is wrong. Okay, A तो false. A false. Okay, but R is correct. So A is false, R is true. Right answer will be option B. Suppose a state
wants to conduct all government work in its own language. What allows this under the Indian Constitution? Okay. Only union list power, language policy with multiple official language, imposition of Hindi by central government and Supreme Court order. कहा जाउची जे जदि गोटे स्टेट चाहूची जे तार प्रत्येक गवर्नमेंट वर्क तांको निज लैंग्वेज रे कंडक्ट करिया पे से माने संपूर्ण करि परिबे काहे कि ना हमर शेड्यूल लैंग्वेज 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस आर देयर. ओके लैंग्वेज पॉलिसी विथ मल्टीपल ऑफिशियल लैंग्वेज जहा कि हम ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करछि से ताहा को हेल्प करिवो एंड से माने सेबडी करि पारिबे कॉन्स्टिट्यूशनली दैट इज अलाउड. In a central government job exam, a candidate choose to write in Kannada. Which policy allow this? Again, obviously, scheduled language provision in the constitution. हमें पढ़ी scheduled language under रे आमर बहुत गुड़ा 22 languages are there. से भीतर कन्नड़ भी गोटे ही परिवो से भली. Okay. Then next is India has avoided language-based conflicts like Sri Lanka. Yes. हमें अवॉइड करि पारले. इंडियन लीडर्स प्रोमोटेड हिंदी कॉशियसली एंड रेस्पेक्टेड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. यस दैट इज द रीजन हमें इम्पोज करने हिंदी को हमें बहुत कॉशियसली बहुत रेस्पेक्ट देइछ हमें लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड दैट्स व्हाई इंडिया हैज अवॉइडेड लैंग्वेज बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट लाइक श्रीलंका. ओके सो आंसर विल बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट promotion of Hindi means Hindi is imposed on all Indian state. ना impose no बहुत cautiously ताको हमें promote करिवार अछि impose कोडी कराला. The constitution makes Hindi the only language for official use. No, both A and R are false. Both A and R are false. Okay. Next, suppose a regional party win election in a state which post 1990 suppose a regional party wins election in a state which post 1990 change will help it exercise autonomy. 1990 परवर्ती समय को सिचुएशन स्टेट पार्टीज मानक बहुत ऑटोनोमस वे रे वर्क करिया पे हेल्प करिवो. ओके दैट इज सेंट्रल मस्ट रेस्पेक्ट स्टेट गवर्नमेंट ड्यू टू कोआलिशन कल्चर. कोआलिशन एरा इंट्रोड्यूस हेतिला आफ्टर 1990 जोथि पई सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट मानन को रेस्पेक्ट देबार ही अछि बिकॉज वर्तमान सेंट्रल गवर्नमेंट रे कोनसी पॉलिटिकल सिंगल पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी गेन करिवारे पॉसिबल हो नाही. वर्तमान में हमें देखिबा बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म हेछि. बीजेपी नुह बहुत गुड़ाए आंध्र प्रदेश बहुत गुड़ाए बिहार किछि पार्टी देन आसीगला हमर महाराष्ट्र किछि पॉलिटिकल पार्टी समस्त कोआलिशन फॉर्म हेछि. दैट्स व्हाई सेंटर मस्ट रेस्पेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट ड्यू टू कोआलिशन कल्चर. ओके नेक्स्ट ए स्टूडेंट्स क्लेम कोआलिशन पॉलिटिक्स वीकेन इंडियन डेमोक्रेसी. जदि जने स्टूडेंट क्लेम करछि जे कोआलिशन पॉलिटिक्स वीकेन इंडियन डेमोक्रेसी हाउ डू रेस्पोंड अकॉर्डिंग टू द बुक. ओके अकॉर्डिंग टू द बुक तम रेस्पोंड कोन रहइबो. कोआलिशन पॉलिटिक्स जोगु इंडियन डेमोक्रेसी वीकेन होछि देखिबा तमे स्ट्रांगली को एग्री करिवो इट इंक्रीज इंस्टेबिलिटी ना तमे डिसएग्री करिवो जे इट प्रोमोटेड रेस्पेक्ट फॉर स्टेट ऑटोनॉमी. कोआलिशन पॉलिटिक्स द्वारा स्टेट ऑटोनॉमी को हमें प्रोमोट करछे तो ए स्टेटमेंट को तमे डिसएग्री करिवो ना. नेक्स्ट यू एग्री कि इट अलाउड टू मेनी पार्टीज टू कंट्रोल पावर ना तमे डिसएग्री करिवो इट हेल्प सेंट्रल गवर्नमेंट रूल विथ मोर कंट्रोल. तो राइट आंसर विल बी हमें डिसएग्री करिवा स्टेटमेंट को अकॉर्डिंग टू आवर बुक कोआलिशन पॉलिटिक्स इंडियन डेमोक्रेसी को वीकेन करूनी यावरी इंडियन डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करूची. ओके पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को आहुरी स्ट्रेंथन करची. फेडरलिज्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आहुरी स्ट्रेंथन करची बाय रेस्पेक्टिंग द स्टेट ऑटोनॉमी. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी. ओके नेक्स्ट Federalism became more effective in India after 1990. Yes, correct. Coalition government required national parties to share power with the regional party. Obviously, regional parties सह national parties मानको power share करिवार ही अछि. Coalition structure, coalition nature न रहिले केमिति फेडरलिज्म इफेक्टिव हबो. तो फेडरलिज्म मोर इफेक्टिव 1990s पर एथि पई हितला जस्ट बिकॉज ऑफ द कोआलिशन एरा. बोथ एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सुप्रीम कोर्ट रूलिंग हेल्प स्ट्रेंथन फेडरलिज्म इन इंडिया. यस बहुत गुड़े सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अच्छी जे कि इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथन करछि. करेक्ट इट परमिटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिमूव इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट मोर इजिली. नो एभली ही परिबोनी. सुप्रीम कोर्ट केबे परमिट करछि सेंट्रल गवर्नमेंट जे इजिली से माने स्टेट गवर्नमेंट को रिमूव कर पारे. नो एभली नाही. ता आंसर विल बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. नेक्स्ट
local government are best suited to manage local problem. Yes, people have better knowledge of the problem in their localities. They have better knowledge regarding how to use their resources very judiciously. So both A and R are true, and R is the correct explanation of A. A will be the right answer. Okay. Next, local government have more powerful and effective after 1992 constitutional amendment. Yes, correct. The constitution made it mandatory to hold regular elections to local bodies and reserve seats for SC, ST, OBCs and women. Yes, that is correct. According to 1992 constitutional amendment, so right answer will be again both A and R are true, and R is the correct explanation of A. 1/3 of all positions in local bodies are reserved for women. Yes, the central government wants to reduce the population of women contesting election. Na, right answer will be A is true, but R is false. बहुत easy अच्छे, depth कुछ बाकी आवश्यक नहीं. Next, the state election commission supervise the elections to the Lok Sabha and Rajya Sabha. No, state election commission Lok Sabha Rajya Sabha election को supervise करेनी. Okay, and for that there is election commission of India, ECI. ECI conduct it. ECI supervise Lok Sabha and Rajya Sabha parliamentary election, president election, state legislative assembly election. Okay, state election commission are responsible for conducting elections to the local bodies. Yes, that is correct. It means A is false, but R is true. Okay. Next, the nature of power and revenue. The nature of power and revenue sharing with local government is same across the all states. Okay, the nature of power and revenue. Power and revenue कोभली शेयर करा जाउची local government सह सी पूरा सबु स्टेट रे इक्वल. Second, the constitution of India mandate equal sharing of power and revenue among alls. Constitution of India mandate equal sharing of power and revenue among all levels of government. This is correct. Okay, constitution रे मेंशन करा जाइछि से आमे केमिति पावर एंड रेवेन्यू को आमे डिफरेंट गवर्नमेंट सह आमे इक्वली शेयर करि परिबा. बट द नेचर ऑफ पावर एंड रेवेन्यू शेयरिंग विथ लोकल गवर्नमेंट इज नॉट सेम अक्रॉस ऑल द स्टेट्स. किछि स्टेट्स अछंती जो माने कि निजर पावर एंड रेवेन्यू को इफेक्टिवली शेयर करू नांती लोकल गवर्नमेंट सह, जोथि पई लोकल गवर्नमेंट गुडी को इफेक्टिवली वर्क करि पारु नांती. ओके, आको आमे डिस्कस करथिले अंडर लिमिटेशंस और problems. Okay, last part में पढ़ते most states governments have not transferred significant powers to the local government. It is the major problem, we need to address it. पढ़ते so right answer will be that is A is false and R is correct. Okay, wait, R is the Constitution of India mandate equal. Sorry. I'm really sorry. This is also wrong. Okay, the Constitution of India mandate equal sharing of power and revenue. No, power को equal share करा जाइनी among different level of government. Okay, yes, किछि subject दिया जाइछि central government को, किछि subject दिया जाइछि हमरो state government को, but power को equal share करा जाइनी नहीं. Okay, sorry. So both assertion and reason both will be wrong. Okay, both are false. Okay, option रू देखि कि मु ए point को judge कली, otherwise मु भी answer wrong कहि थांती. Okay, nice question. Okay. Next, decentralization helps in making democracy more participatory. Obviously, local level people माने participate करी परिबे, democracy को depend करिबारे help करे. Okay, democratic culture को innovate करिबारे help करे. People at the local level can directly take part in the decision making. Yes, both are correct. Both A and R are true. R is the correct explanation of A. Next is ग्राम सभा इज ए की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एट द विलेज लेवल. ऑब्वियसली ये एग्जीक्यूटिव बॉडी को, ग्राम पंचायत को सुपरवाइज करे. इट अप्रूव द बजेट एंड रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत. यस, करेक्ट. सुपरवाइज करे, दैट इज बाय अप्रूविंग द बजेट, बाय रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत. बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट, all members of gram panchayats are nominated by the state government. ग्राम पंचायत members माने state government द्वारा nominated होते. No, एमती तो नुह. Election हुए. The state government supervise the work of gram panchayat. No, the state government supervise the work of the gram panchayat.
ओके ये तो लगुनि देखा ऑप्शन कौन अच्छे ऑल मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत मेंबर माने तो इलेक्टेड होती सो ए विल बी फॉल्स ओके देन आर ए फॉल्स आर इज ट्रू और फॉल्स देखिबा तो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सुपरवाइज द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत रो वर्क को तो एक्चुअली सुपरवाइज करे हमर ग्राम सभा ओके बट जब ऑप्शन रू देखा बोथ ए एंड आर तो ट्रू नुह ओके हेनी बोथ एंड आर ट्रू तो नुह ये भी हेनी जब आम सी डी भितर देखा देख मुझे ऑप्शन रू केमती जाऊँगी ओके मुझे कन्फ्यूज अच्छी रीजन को नहीं द स्टेट गवर्नमेंट सुपरवाइज द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल रे स्टेट गवर्नमेंट भी ग्राम पंचायत वर्क को सुपरवाइज करे बट राइट आंसर अकॉर्डिंग टू बुक आम जाचे ग्राम सभा हवा आंसर ओके से हिसाब से मुझे भूल कहली देखा एमती तो ना बोथ आर रंग ऑप्शन ना आसोसन कम्प्लीटली रंग आम जाचे तो ए इज फॉल्स मीन्स आमर ऑप्शन रो हमको लगुच स्टेट गवर्नमेंट सुपरवाइज द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत ये अन्य सेंस रे कह जाए ओके यस ग्राम सभा तो करे ग्राम सभा सह ग्राम पंचायत आम जो डिफरेंट वर्क हुए जहाँ भी कंस्ट्रक्शन वर्क हुए ग्राम पंचायत जो रेवेन्यू कलेक्शन हुए स्टेट गवर्नमेंट भी उसको सुपरवाइज करे जे केते इफेक्टिवली ग्राम पंचायत वर्क कर ओके सो ग्राम पंचायत तो लोक मान सामने उत्तरदायी ओके अकाउंटेबल ता सहित स्टेट गवर्नमेंट भी ग्राम पंचायत को सुपरवाइज करे तो से दृष्टि आम कहवा आर इज ट्रू तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू ओके स्टूडेंट देख मुझे आम बुक्र स्टेटमेंट को आम जब स्ट्रांगली आम धरी था रिजन टी रंग होता बेले बेले ये क्वेश्चन को ओके दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे कहबी ओके ये क्वेश्चन को आम ऑप्शन भी बेले देखी ऑप्शन को देखिकी भी हमको बेले बेले क्वेश्चन को एनालिसिस करिवार अछि ओके नेक्स्ट local self-government has strengthened democracy in India. Yes, correct. It has increased the participation of women and weaker section. Yes, SC, ST, women mananko pai reservation अछि. So right answer will be both A and R are true and R is the correct explanation of A. Next, Gram Sabhas are regularly held across all Indian villages. Regularly तो हुए नहीं. It's a major problem. देखिबा कौन? People in टिके मो स्लाइड ऊपर नहीं आउचे. Okay. So people in rural area do not want to participate in governance. Okay, nice question. ये भी ଗୋଟେ confusing question आसीगला. Both and R are true and R is the correct explanation of A. Gram Sabhas are regularly held across all Indian villages. Okay, Gram Sabhas तो regularly held होनी जदि आमे बुक को देखिबा आमे बुक रो मेजर प्रॉब्लम रे आमे देखिथिले that is while elections are held regularly and enthusiastically gram sabhas are not held regularly आमे पढ़ी जे according to books सिबा आमे ओके तो gram sabhas are held across all Indian villages regularly ये तो भूल हबो wrong ओके इट मींस ये कटिगला हबोनी ये भी कटिगला हबोनी बोथ आर ट्रू ओके ए इज ट्रू ये भी कटिगला ओके राइट आंसर हबो हमरो दैट इज डी हां ए इज फॉल्स people in rural areas do not want to participate in governance yes रूरल लेवल लोक मानकर गवर्नेंस रे पार्टिसिपेशन बहुत लो एंड दैट्स व्हाई तो आमे पावर को डिसेंट्रलाइज करथिले टू इनकल्केट द प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन ओके आको इंप्रूव करिया पय तो आमे डिसेंट्रलाइज करथिले सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी अगेन इट्स ए इंपोर्टेंट क्वेश्चन आई विल से ओके नेक्स्ट दैट इज द ड्रीम ऑफ ट्रू गवर्नमेंट okay the dream of true self government in India is still not fully realized yes बहुत गुड़ा में प्रॉब्लम देखिले जमते हमें कहले स्टेट गवर्नमेंट्स माने पावर एंड पावर को सिग्निफिकेंट पावर को प्रॉपर्ली ट्रांसफर करू नांती लोकल गवर्नमेंट सह ग्राम सभा प्रॉपर्ली कंडक्ट हो नाही तो सेल्फ गवर्नमेंट द ड्रीम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट स्टिल हमें फुली रियलाइज करि पारी ना द ड्रीम ऑफ ट्रू सेल्फ गवर्नमेंट in India is still not fully realized correct most government have not transferred enough power and resources to the local body yes correct that is the reason behind that okay that's why ame realize kari parune so right answer will be both A and R is true and R is the correct explanation of A okay so this is all about today's session little bit बहुत lengthy hi gala session ti भाभी दुईटी सेसन रे दुईटी पार्ट डिवाइड करी बट भावुची वन गो ही या एंड करवाटा बेटर रहिबो एंड आई होप कि आपण मानको ए सेसन टी बहुत भल लागि थिबो एंड क्वेश्चंस गुडी को भी आपण को पसंद हेतिबो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत किछि अछि सो रेकमेंड करबी 1.5x स्पीड रे वीडियो टी को देखंतु
ओके एंड विथ दैट अगेन टेलिंग यू बुक सह साइमल्टेनियसली भिडियोटी को देखो सो दैट बेटर अंडरस्टैंडिंग डेभलप हो पार जदि भिडियोटी आपको भल लगी सेसन भल लगी निहाती लाइक करूँ सब्सक्राइब भी करूँ कमेंट्स भी करूँ एंड निज फ्रेंड्स मान शेयर करूँ ओके बहुत स्टूडेंट्स देखुं बट से सब्सक्राइब करूना काइंडली सब्सक्राइब इट लाइक एंड शेयर कमेंट ये सब बिना ओके से सब ही हमको मोटिवेशन दिए आहरी अधिका हार्डवर्क करिवारे कंटेंट को बेटर करिवारे ओके एंड आई होप आपण माने ये सब को ध्यान रखिए थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग